love. Now love, he says, is the ability, ये essence है जो मैं भी बात कर रही हूँ उसका, it is the ability to commit oneself to others and abide by such commitment. The ability to commit oneself to others and abide by such commitment, even though they may require self-denial and compromise. Now this kind of love is expressed when a person shows an attitude of care, respect and responsibility towards another. So the social institution that is the counterpart of this stage in the normal life cycle is your sense of ethics. Your ethics come from this stage. So ethical sense evolves when you recognize the value of committing oneself to lasting friendships and social obligations. So the importance of honoring such commitments, even if they require personal sacrifice, is still important. मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत फनी कुछ ऑनलाइन सर्वे टाइप में कुछ आर्टिकल पढ़ा था जो मुझे एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं उसके साथ आइडेंटिफाई भी नहीं करती और मैं उसको काउंटर क्वेश्चन जरूर करूँगी. That was an article about urban women in Indian culture that survey found that they always have a backup plan. पढ़ा था कभी? Yes. पढ़ा है? Backup plan to 65 years of age. Now generativity is where you show concern not only for the welfare of the next generation, but also for the nature of the society in which your next generation would live or survive. Generativity is your concern not only for the welfare of the next generation, but also for the nature of the society in which the next generation will live and survive. The care or the kind of concern that you have for the next generation and also for the world around, जो आपने legacy में छोड़ के जाना है next generation के लिए. So generativity is the older generation's concern to establish the next generation and to guide them so that they can replace them nice and proper. And it is exemplified by a sense of personal fulfillment that is associated with the production, rearing and subsequent achievements of the next generation. I don't know if you've heard this, but I generally say this to my students that we grow through you. No? मैं तो जो हूँ यहाँ पे हूँ इतने सालों से यहीं पे थोड़ी एक आधी प्रमोशन और हो जाएगी उसके बाद किसी प्रमोशन पे रिटायर हो जाएंगे. But then every year you all grow and you go to different places and you grow in your personal and professional lives. And still if you remember that yes, this is what I could contribute in your bringing up somewhere, little bit somewhere. That's how we feel that you are our offshoots and we grow through you. Now the kind of investment that we do in producing sound bites or whatever, that's our contribution. So जो भी हमें आता है जब अगर एक जनरेशन दूसरे को सिखा पाती है और फिर उनकी ग्रोथ में उसको अपने लिए एक सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस कर पाती है, that is what is generative. ठीक है? So that is your older generation's concern to guide the next generation and to gain a sense of personal fulfillment associated with production, with rearing and subsequent achievement of your offsprings.
But then it is also, you're talking about everything that gets passed on from one generation to another. It is not only the technological efforts, but everything that you pass on. So the technological products, the ideas, the books, the art, culture, heritage, whatever you give on to the next generation. And it is not essentially between the parents and the children, or the parents and the offspring, or the teacher and the taught. Overall, as a society, if one generation is contributing towards the betterment of the coming generations and the world in which they will live in, that is what is generating. How many of us are involved in any kind of कुछ करते हो hobby में, कुछ handicraft or some knitting or something, कुछ किया करते हो? मेरी बेटी को मैंने उस दिन भेजा, एक किया ना 22 में छोटू मोटू बर्मती क्राफ्ट की शॉप में. I was looking for I don't know if anyone of you does it. Tatting किया है कभी? शटल, लेस बनाना? सुना भी नहीं. ये देखो, अब हमने किया था, मेरी मदर ने किया, मैंने किया, और शायद हमारी जनरेशन के बाद किसी ने करना है कि नहीं, है ना? So बड़ा एक अलग सा आर्ट था. It's like a shuttle, ऐसे आई शेप में प्लास्टिक या मेटल का पीस आता है, उस पर थ्रेड चढ़ता है और उससे यू मेक अ नॉट से बनाकर यू मेक ब्यूटीफुल लेसेस. सो मेरे को बड़े साल बाद शॉप चढ़ा के अरे तो शटल ढूंढने निकली मार्केट में, जैसे जी मिलती अब नहीं आती. थ्रेड मिल रहा है उसका जो उस पर चढ़ता है, लेकिन नॉर्मल एंगल का थ्रेड चढ़ता है. सो आई वाज डेस्परेटली, मी एंड माय सिस्टर वर वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस. तो वो पता चला वहाँ पे वो शॉप है, एंड माय डॉटर वाज गोइंग बाय चांस, तो मैंने उसको बोला वहाँ पूछ के आना, तो समझा के भेजा था, फोटो दिखा के इंटरनेट पे कैसी होती है क्या. एंड दैट अंकल जी वाज लाइक ओवरवेल्म्ड. ही वाज लाइक, बेटे आप करते हो, ये तो खत्म हो गई चीजें, इतने सालों बाद मैं ढूंढने आया है मेरे पास. उन्होंने एक मेटल की और एक प्लास्टिक की फ्री दे दी, ले जाओ, कि कोई जीवित रख रहा है ऐसी कला को, और यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. So that person's involvement in giving something like that, and that kind of, that is generativity. That these kind of arts should not die down. There are many things. So अब ये जो आप heritage में करते हो, इल्लू making और ये वो सब है ना, these are all things that are passing. So it is not only your technological knowledge, but everything that you pass on from one generation to another is what is generativity. And he says, Erickson says that the new generation depends on the adults, and the adults, they depend on the new generation. So it is a kind of mutuality that we share. Now here, if this conflict is resolved, that's good. Otherwise, if one generation is unable to pass things to the other, or cannot assure equally beautiful world for the next generation, then everything will die with this generation. What has happened with our most of the cultural things? आयुर्वेद क्यों नहीं चलता और एलोपैथी इतना सर्वाइव क्यों करती है? अब आ गया, वापस हो रहा है, रिवाइव हो रहा है, थैंक्स टू द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस गवर्नमेंट के हर बड़े हॉस्पिटल में अब एक ऑल्टरनेट मेडिसिन का सेक्शन है. सो हमारी जो ऑल्टरनेट मेडिसिन की थेरेपीज हैं वो रिवाइव हो रही हैं, लेकिन अभी भी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, अ डाउट टुवर्ड्स आयुर्वेदिक स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन. Many of the scientific endeavors that we had in our culture are now almost obsolete or dead, because we could not pass it to the next generation, and that is how any science or any field stagnates, खत्म हो जाता है, वो stink करता है और खत्म हो जाता है. So that is the other part, generativity versus stagnation. Now if this conflict is properly dealt with, the virtue you gain is care. Now care stems from the feeling that something or someone matters. So it is the psychological opposite of apathy. Now if you fail to establish a sense of generativity and you slip into a sense of self-absorption, that would be apathetic. So lacking generativity, maybe you would cease to be an active contributing member to the society, or you live only to satisfy your own personal needs. I should not be saying this, but I have seen my teachers, some of my teachers, who were very, wary of sharing knowledge with us. अभी तुम कभी हमारे साथ जब आप आगे सेकेंड ईयर में रिसर्च में आओगे, इट्स वेरी ओपन. लाइक आजकल तो एक कॉम्पिटिटिव हो गया ना, होड़ हो गई है, स्कोर लेना है यूजीसी का. तुम्हारी जनरेशन भी अब अवेयर है कितने रिसर्च पेपर के कितने नंबर मिलेंगे, ये
लेकिन इंटेलेक्चुअल राइट हमेशा गाइड का बनता है या टीचर का बनता है ना। ठीक है, काम आप करेंगे, फील्ड में आप जाएंगे, लेकिन उसको चैनलाइज करके रिसर्च पेपर में लाना। और हम लोग ने शायद आउट ऑफ रेवरेंस, हमारे गाइड ने कभी बोला नहीं, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस अपने पीएचडी के बाद में भी जो पेपर निकाले उसमें गाइड का नाम लिखा था फर्स्ट ऑथर। टिल माय गाइड टोल्ड मी रोहिणी, अब आई डोंट नीड इट, आई एम रिटायर्ड, फर्स्ट ऑथरशिप तुम्हारा नाम होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट नहीं, अब आप सिंगल ऑथर से आप पब्लिश करेंगे, मेरा नाम नहीं देंगे आप। ठीक है, एंड आई रियली इन अ वे माय गाइड इज लाइक रियली वर्थ रेफरेंस, बहुत बहुत अच्छी लेडी है। लेकिन मेरे जैसे बंदे को अगर आज कहें तो वन थिंग दैट आई श्योर कि फर्स्ट ऑथरशिप अगर मेरी है तो एक और तुम्हें मैं बता रही हूँ, यूजीसी का रूल है, पहले था वो भी डाइल्यूट कर दिया। जो डिवाइड होता है स्कोर, सपोज 10 मार्क्स का पेपर है, जो मिलता है ना कैस्ट में, ठीक है, तब आप आगे कल को इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो आपको पब्लिकेशन का स्कोर मिलेगा अगर आप पब्लिश करते हैं। तो 10 मार्क्स का अगर पेपर है तो फर्स्ट ऑथर गेट्स 70%, 7 मेरे 3 आपके लॉपसाइडेड हो जाते हैं। तो फिर यूजीसी ने क्या किया कि अच्छा आप करें, अगर सेकंड ऑथर के नाम से कुछ नहीं, आपने एक एस्टेरिस्क डालना और लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। ठीक है, so first author gets 7, corresponding author also gets 7. It's okay. 10 नंबर के पेपर में 14 मिल रहे हैं, मेरे भी 7, बच्चे के भी 7, क्या प्रॉब्लम है? सही है। अब हम लोग इस तरह से काम करते हैं, और शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, हमारे गाइड्स हैं। There have been our teachers, there have been our guides who have been supervisors of some of my colleagues. वो कहते हैं हमारे पेपर थीसिस में से हमने एक पब्लिकेशन नहीं की, पूरी छिन्न भिन्न होकर पूरी पब्लिश हो चुकी है, लेकिन कहीं हमारा नाम नहीं है स्टूडेंट का, गाइड ने अपने नाम से कर दिया, सारा रॉ डेटा वहाँ रखवा लिया ताकि आप बाद में भी उसमें से कुछ खंगाल के ना निकाल पाओ अपने थीसिस में से। अब ऐसे जो टीचर्स हैं वो क्या नहीं, तुम्हें लगता है कि स्टिंक करके स्टैग्नेट कर जाएंगे? कर गए हैं। और आज की डेट में एक दो बार ऐसा हुआ है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी इतनी उलझी हुई है कि पीछे कोई बता रहे थे कि वो इतने बीमार थे, बाय चांस स्टूडेंट कोई चले गया कुछ काम से, तो पता चला कि वो एक्चुअली फिल्मों में होता कि पानी ही लेके खुद उठाने वाला हालत में, ठीक है, एंड देयर वाज नो वन अराउंड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, हैज फैमिली, हैज 2 चिल्ड्रन, हैज एक्स्ट्रा मैरिटल फैमिली आल्सो विद 2 पर्सन्स, बट कुछ नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था बदले की किताब पे। सो स्टूडेंट भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब काम से काम वाला रिलेशनशिप। अब these kind of depersonalized empathetic personalities, do you think they will land up in the next stage with wisdom? No, they will be full of despair, which is the next thing. So the crisis of middle age is very terrible to handle. Now the last stage is maturity. Maturity, the conflict is, this is 65 years onwards till death, and ego integrity versus despair. The virtue that you gain is wisdom. Now this is the stage where the whole perspective towards life changes. पुरानी जितनी 7 stages हैं उसमें आप आगे की तरफ देखते हैं, इस stage में आप पूरा पीछे की तरफ देखते हैं। The individual is just reflecting upon the past life, which is almost nearly complete. So whatever efforts you've made, whatever achievements you have had or accomplishments you've had in your lifespan, that is what you're focusing at. Now old age as such is, beset with a lot of demands. Physically आपका बहुत कुछ demanding हो जाता है, बहुत सी आपकी you're facing lot of deteriorations and making new adjustments. Health के साथ retirement है, income reduce होती है, maybe you've lost your spouse and companionship का problem है, friend circle आपके आधे अधूरे रह जाते हैं. So this is the stage where there is a need to establish new affiliations, especially affiliations within one's own age group. That is important. And during this period, as I mentioned, there is a definite shift in your perspective towards life, from the future towards the past. So now in this stage, a sense of ego integrity. It arises from individual's ability to glance back at life and to have a full perspective of whatever you've had in life. So be it your marriage, your children,
your grandchildren, your profession, your accomplishments, your hobbies, social relationships, कुछ भी उन पे जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, and if you feel that I am satisfied, then you land up with a sense of ego integrity. Otherwise, a sense of dissatisfaction would lead to a sense of despair. I'll give you another example of two people I know. One gentleman died of acute lung cancer, was on ventilator for quite some time. Willfully the family said, what the case may have ventilator satisfaction, we will land up with the virtue of wisdom, which Erickson calls it as wisdom of the ages. So wisdom basically is a detached and yet an active concern with life in the face of death. So this is the stage. If you're wise and you've reached that stage where you're contented, then you are almost ready to go. जैसे मैंने पहले बोला, he was ready कि मैं जा रहा हूँ. I'll give you another example of my husband's my husband's grandfather had a nice, fulfilling life. Lost his wife around 5-6 years before he went off. बड़ा सा घर है, उसमें से सारा छोड़ दिया, बंद करवा के he moved out to an outhouse, one single room, and वहीं पे रहते थे. And कोई मेड वेड नहीं रखा है, कुछ नहीं, अकेले रहेंगे, कोई बच्चे के पास जाके नहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे. So my father-in-law used to go every week and to change his bedding and all that stuff. और किसी को सफाई वाली को भी नहीं अंदर आने देते थे, कुछ नहीं. तो वो हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद my father-in-law used to go to सफाई वाली को बुला के सब क्लीन कराना. पीछे वाले 7 वालों घर से वो किया हुआ था. They used to give him food and family used to pay. Sounds very अजीब सा लगता है, but that he was very happy. And I've seen him in his single room. हर season में जैसे अभी winters आ गई, the room till roof used to be stacked with कंबल, new blankets, everything. He could barely walk. He used to just hop on in his kinetic. And then he go around in the city. He live in Rajpura. So ancestral house वहाँ पे था. राजपुरा में स्कूटर पे बैठेंगे. He put a चूना का bag on the scooter, उसमें होल करके he go around पूरे शहर में से ट्रेल बनाते हुए ना रास्ता. And जहाँ पे कोई पुअर कुछ दिख गया, उसको एक टोकन नंबर पहले बैठ के पर्चियाँ काटते. 1 2 3 4 टोकन. उसको पर्ची पकड़ा के आते हैं. ये ट्रेल फॉलो करते हुए मेरे घर तक आ जाना. ठीक है, फिर उसको एक वनीम की बोरी या एक जो भी खरीदा उस साल हमसे मंगवा लेते थे बल्क में, तो एक कंबल ऐसे सब बांटते थे. That was his normal routine. Last days of life, I think 2 or 3 days before he passed away, he went to a brick kiln. और वहाँ पे जितने कपड़े थे ना अपने 2-3-4 पजामा कुर्ता सेट्स होंगे, whatever, very austerity वाला life. Not that he was financially not well off. वो सब बांटा है, अपने स्वेटर सब बांटा है 2 दिन पहले, as if he could anticipate that he is about to go. और जब निकलने लगे ना, so poor laborer came and कहते यार अब तो बचा नहीं कुछ, तो जो पहना था स्वेटर वो भी दे दिया उसको, ये एक बचा है अभी ये ले ले, ठीक है. And फिर then he passed away in 2-3 days, multi organ failure with age जैसे. पर जिस दिन बीमार हुए उस दिन भी he told my father-in-law and his brother, छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाने, मैं चंडीगढ़ फोर्टिस में जाऊँ. We took him to Fortis and then finally had to be taken to PGI and so on. But then after he passed away, it was so clean. There was nothing कि वो छोड़ के गए जिसके पीछे बाद में कुछ हो या किसी को तुम्हें कुछ देना पड़े. खुद से सब कपड़े भी दे गए ना, जो पहना था वो भी अपना almost दे के चले गए. See the contentment in life, you know. So and मतलब बहुत jovial and बहुत मतलब self-made person, partition के बाद settle हुए या तो. So अलग सा है. Now this is wisdom, you know, which is very rare to be found. Now that kind of gratification is what you look for and not scared of death. So that is what it is. So this is another extreme. Otherwise, people would despair, would land up with bitterness, with remorse, depression, hypochondria, contractile, and there you would find people at this age have a kind of a paranoia of being abandoned. तुम्हारे grandparents हैं घर में? Yes. कभी तुम्हें ये सेंस हुआ है कि वो फीलर्स टेस्टर खींचते हैं तुम्हारे पे और तुम्हारे पेरेंट्स पे? Yes. है ना? मैंने छाट दिन है ना?
had 6